Good evening. Agriculture or rural development, these have been very favorite topics to me. And I have always been thinking that the agricultural landscape of India needs certain policy interventions to increase the ease of doing agriculture in India. Unfortunately, farmers of India have always been provided a kind of uncertainty in terms of agricultural survival. Since long, there has been a saying that Indian agriculture is gamble of monsoon, etc., etc. The agricultural reforms in India have been introduced, but in piecemeal ways. For example, Land Ceiling Act was brought, but in some states it could not be implemented. Another important thing was the land consolidation. Land consolidation is a very, very important factor for the farmers, and it is Herculean task for any government because agricultural holdings to become sustainable for farmers really need relocation so that all these small holdings get consolidated, and whatever the holdings a farmer is having, at least he can manage his irrigation, cropping, etc., etc., at one place, which will not only decrease the cost inputs but also help him in planning the produce as well as other cost related inputs like fencing or soil testing or making irrigational infrastructure. All these costs will be reduced if the land holdings are consolidated at one place, because at if the agricultural holdings are scattered at various places, so making irrigation arrangements, making fencing arrangements, etc., etc., becomes at several places, which actually increase the cost and sustainability for the farmers. Agricultural commodities have always been regulated by several acts. The agricultural produce of farmers have been regulated by एग्रीकल्चर मार्केटिंग कमेटी एक्ट, मंडी समिति जिसको हम बोलते हैं। किसान अपने उपज को, अपने प्रोड्यूस को एक स्पेसिफिक मंडी में ही बेच सकता है। उसी तरीके से एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस आया तो वो एक तरीके से मैक्सिमम प्राइस हो गया किसान के लिए, जबकि किसान को ये पूरा पूरा होना चाहिए था कि he should have been given the option of not only selling his grains to FCI, but if he can fetch better price in the open market, why not?
So, in the name of minimum support price, there was creation of almost buyer monopoly, and that has hurt farmers because uh, the best way to create a sustainable ecosystem is to create a market. Unfortunately, the agriculture of India has not seen that 91 moment in India. Like industrial reforms were very much introduced in 91, but agriculture sector did not could not see that kind of drastic reform where a farmer could have the option of selling his grain either to FCI or at higher price at any part of India. Agricultural market was very much controlled in terms of geographical monopolies. Mandi Samiti Act and all that, they were forcing the farmers to sell their vegetables, etc., to their mandi. They cannot take it outside of the jurisdiction of mandi, and their monopoly of farmers, buyers in the mandi, could never give them that kind of competitive price which they could get in case they were allowed to take their produces to any part of the country where they could fetch the better sale price. So the grains of farmers was supported by the minimum support price by the government as a minimum guarantee to the farmers, so that at least they are not at very grossly disadvantageous position in case the prices fall in the market. But this minimum support price actually became a benchmark price, upper price of the grains, which again created a kind of disadvantage to the farmers because fine minimum support price should be there so that at least if the farmer finds his grain not being at higher price available in the private sector or in any mandi, at least he can sell his produce to the FCI and all that. That's fine, this arrangement is okay, but it would be better if there could be another opportunity window in terms of, okay, minimum support price is fixed, but what if somebody is ready to buy at the higher price more than the minimum price, and if that person is a private entity, why a farmer should be restricted not to sell that? Number one. Number two, why a farmer cannot take his grain outside his district, state, to any part of the country where he or she can get better price? So the mobility of the agricultural market, the expansion of the agricultural market, treating the country as a one market, was very much required, not only for the growth of agricultural sector, but to give a justice to the farmers. A farmer has all right to sell his produce at any place where he feels that he can fetch a better price. Why there could be a geographical restriction that you cannot take your wheat to other part of the country, this part of that? Why? It was a legacy of, you can see the regulation Raj. When we want that a farmer should be made independent to sell his produce to at any part of country, then any law which restricts him to sell his produce in a particular area actually restricts the opportunities to that farmer to fetch better price. So a farmer should have been given opportunity to sell his grain or other produces wherever he or she can fetch a better price. Minimum support price is required because a farmer is very much uncertain about the pricing, and if there is a cartelization, then in that situation minimum support price will always be very helpful for him. But creating a double opportunity system for a farmer
Okay, if he wants minimum price, FCI is ready to buy it. If he can fetch a better price, why not outside? So, in this way, farmer has a double benefit. And another important thing was that when we are committed, when we know, want to know that the growth story of India is very much rooted in the farmers' growth. So the contract farming was a obvious choice. Suppose I am a businessman, I go in a village and a farmer in the village, I say, okay, you have 1 acre of land, okay. What you can do is that you sow this seed, or you do the farming of this agriculture. The pricing at the time of maturity will be this. So both buyer and farmer can do some understanding. Okay, whatever produce you produce, I will buy at this price in the month of October, November, whatsoever the maturing time of the harvest. So if farmer thinks that okay, now he has one assured buyer, assured price, and assured advances, if any, because contract farming, if it gets a legal framework, then definitely a contract buyer will try to support his farmer in all terms. I mean, he will not only buy his produce at a agreed price, but he will also like to give that input support, financial support to that farmer, so that he is able to meet the standards and cost related expenditure to meet the expectation of the harvest when it is mature. So this is an enabling requirement. This was an enabling requirement, and it should have been done earlier. So contract farming is nothing. It is a rather an enabling factor to the farmers of India. So there were requirements of at least 3 things since beginning. One was that we needed some modifications in the Essential Commodity Act, because it is too draconian and it needs rationalization. And then another thing our farming sector was very much in need was the uplifting of restrictions with regard to mobility of the grains from this part of the country to other part, if farmer was trying to sell it outside that. So farmer was not a kind of restricted farming, grain was not a restricted commodity that you will have to sell only in mandi. You cannot sell it outside of your mandi or whatsoever in other states, whatever we call. So with this kind of restriction, a farmer cannot fetch better price in the competitive market. The agricultural sector in India can be broadly understood into 2, 3 formats. One is that a farmer produces grains, a farmer produces vegetables, fruits. So grain he was bound to sell in the mandi. Similarly, vegetable and fruits, he cannot take it any other part of country. He was bound to sell in that mandi samiti. Grain he cannot take outside the district, state, whatsoever. So actually, the grain and vegetable and fruits comprising almost 90% of our farming commodity were too much victims of the restrictions. And with this kind of mobility restrictions and monopoly buyers like Mandi Samita, vegetables and fruits, and then minimum support price actually becoming the maximum
price for the grains. Minimum support price was that, okay, this is the minimum support. You will be provided this much per your wheat or whatsoever crop has been covered in that, and who will give the maximum? Maximum will be given by the market. So here these reforms were required so that he can get the best of both. In case private buyers are not available, then minimum support price. If private buyers are ready to buy the agriculture produce from a farmer outside the MSP domain, and a farmer is feeling comfortable, why not? That opportunity should not be given. It is very unfortunate. From farm to fork in India is almost, the cost of produce goes to around 60-70% more. In any developed country it is around 10%. In any developed country, from farm to the fork, from farm to the plate of the consumer, there is hardly an increase of 10% of the cost of the agricultural produce. So that shows that in developed countries or better managed country with regard to agricultural products, the 10% of the cost would be the maximum benefit the intermediaries could make from buying the products from the farmers and then making the profits. But in India, this, from farm to the plate, the cost rises up to 70-80%. It means the intermediaries are बिचौलिए किसान से ज़्यादा मुनाफा कमा लेते हैं प्रोडक्ट पे दैन द किसान. तो ये जो नेक्सस है मोनोपोली होने का मंडी समिति का, आप किसान अपने खेत में टमाटर बोया और अगर 1 एकड़ में टमाटर वो ट्रक पे लाद के वो कहीं ले नहीं जा सकता है लीगली, एंड ही इज़ बाउंड टू सेल इन हिज मंडी समिति में, तो ये मंडी के जो बिचौलिए वहाँ बैठे हैं समिति के, दे नो, दे कैटलाइज, एंड देन फाइनली वो लेके घर तो वापस नहीं जा सकता क्योंकि वो पेरिसेबल कमोडिटी है. तो क्या होगा? ही विल हैव टू सेल हिज टोमेटो, टमाटर बेचना पड़ेगा और जो भी वो रेट दे देंगे, क्योंकि एक किसान जो है जब अपना प्रोडक्ट लेके मार्केट में निकलता है तो फिर कैश ही लेके आना चाहता है, वो दोबारा प्रोडक्ट को वापस लेके नहीं आना चाहता है, बिकॉज उसकी अपनी पूरी एक प्लानिंग रहती है कि भाई हमें अपनी फिनेंशियल नीड्स, अदर नीड्स को मैनेज करना है, तो आई हैव टू सेल माई प्रोडक्ट. तो ये मंडी समिति का जो मोनोपोली थी, इसको ब्रेक करना बहुत ज़रूरी था. अब अगर उस किसान को अपना ट्रक ले जाके मंडी समिति में, मान लीजिए उसको 10 रुपये किलो टमाटर देते हैं और वो ट्रक ले जाके कहीं उसको अच्छी प्राइस मिल रही है, कोई कोल्ड स्टोरेज वाला कहीं पे खुला हुआ, उसने बोला कोई बात नहीं आप रख दीजिए, हमारे यहाँ हम ले लेते हैं आपको 20 रुपये का, तो अभी वो नहीं बेच सकता था क्योंकि ही हैज़ टू सेल हिज टमाटर इन दैट मंडी समिति. उसकी मोबिलिटी रिस्ट्रिक्टेड थी और मंडी समिति की कंप्लीट बायर मोनोपोली थी. फार्मर के पास कोई चॉइस नहीं था. तो ये मंडी समिति का जो मोनोपोली थी, ग्रेन की, अनाज की मंडियों की, जो सरकारी मंडियों की मोनोपोली थी, और ग्रेन का जो मोबिलिटी को रिलेटेड लेके जो मोनोपोलिस्टिक और रेस्ट्रिक्टिव प्रैक्टिसेस थी. इसके अलावा जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस और मैक्सिमम प्राइस का जो डिलेमा था, डाइकोटोमी थी कि मिनिमम तो गवर्नमेंट ने कर दिया, मैक्सिमम उसको मिल नहीं पाता, तो मिनिमम ही मैक्सिमम हो गई थी. और
चौथी बात जो कंट्रैक्ट फार्मिंग, क्योंकि किसान को सर्टेनिटी चाहिए अपने प्रोडक्ट के लिए। इस कंट्रैक्ट फार्मिंग से क्या होगा, इनोवेशंस होंगे एग्रीकल्चर में, क्योंकि एक बायर किसान को कहने जा रहा है कि साहब आप ये 1 एकड़ ज़मीन है, इसमें आप ऐसा करते हैं, हम आपको इतना पैसा दे देते हैं, आप एलोवेरा लगा दीजिए। फिर एलोवेरा को आपको इसको मैच्योर कराइए, इसको पूरा कराइए, और ये एलोवेरा आपका जो भी पैदा होगा इसको मैं ले लूँगा इस प्राइस पे। XYZ प्राइस दोनों को देख लिया, किसान ने देखा भाई उसके 50,000 रुपये लागत लगे, उसने देखा कि भाई 90,000 रुपये का उसने सौदा कर लिया तुरंत, और उसका कुछ एडवांस देके किसान को बोला कि अब आप पैदा करिए। अब देखिए किसान के पास एक शॉर्ट एक मार्केट आ गई, उसको कहीं मंडी में भटकना नहीं पड़ेगा, उसको किसी से लोन नहीं लेना पड़ेगा, क्योंकि जो कंट्रैक्ट बायर है वो पहले भी उसको एडवांस देगा, और वो दोनों का एक टर्म एंड कंडीशन हो जाएगी। वो बोलेगा ठीक है हमको इतना सिंचाई में, इतना बीज में, इतना खाद में लगेगा। तो एक तरीके से उसको फिनेंशियल सपोर्ट किसान को मिल गया। किसान के पास सेल करने की एक गारंटी हो गई, और बायर को ये हो गया कि अगर मैं इस किसान से इतना प्रोडक्ट लेता हूँ तो आई कैन स्ट्रेट अवे बाई फ्रॉम ए फार्मर, तो उसको बिचौलिए नहीं, वो डायरेक्ट आ गया बायर। तो ये विन विन सिचुएशन है, और मैं मानता हूँ कि जो ये 4-5 बातें जो मैंने कही है, अगर ये जो नए अभी एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स के जो 3 बिल हैं उनमें यही सब बातें हो रही हैं, एंड इट्स वेरी वेरी ड्रीम कम ट्रू। ये इंडिया के एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स में ये 91 है, जैसे आई थी कांग्रेस की गवर्नमेंट 91 में, तो नरसिम्हा राव जी को कहा जाता है ही वॉज दी फादर ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। ही एक्चुअली लिबरेटेड द इंडस्ट्रियल इकोनॉमी फ्रॉम इंस्पेक्टर राज, रेगुलेशन राज। सो ये एक तरीके का वही मोमेंटम है कि नाउ द एग्रीकल्चरल इकोनॉमी हैज़ बीन लिबरेटेड फ्रॉम इंस्पेक्टर राज, मंडी राज, ग्रेन रेस्ट्रिक्शन राज। ये वही चीज हो रही है। टुडे मैं पूरा दिन पढ़ा कि ये किसान के लिए इसमें क्या क्या अच्छी बातें हैं, और मैं एक रूरल बैकग्राउंड होने के नाते आई ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ये जो कंट्रैक्ट फार्मिंग है इसका क्या फ़ायदा होगा। एक किसान जो एक ट्रेडिशनल फसल बो रहा है और उसको एक इनोवेटिव बायर आ गया जिसके पास पैसा, वो बोला ऐसा करो, आप एक गेहूं धान बोते हो, आप एक काम करो इसमें आपकी बार आप लेमन ग्रास बो दो, और साहब लेमन ग्रास इसमें करीब करीब इतनी पैदा होगी, और सॉइल वेल टेस्टिंग करा देते हैं। तो आप जो है ये काम करते हैं, 1 एकड़ का ये है, तो 1 एकड़ में सपोज करिए उसने कैलकुलेट कर लिया बाहर की उसको लाख रुपए कमाई होगी। उसने किसान को बोला कोई बात नहीं, हम 80,000 रुपये में आपका कंट्रैक्ट कर लेते हैं। अच्छा साहब, किसान को लगा अरे मैं तो गेहूँ और धान तो मैं 25,000 कमाता, ये तो 70-80 हज़ार रुपये मुझे देने को तैयार है। फिर डेफिनेटली उसके पास एक टेक्नोलॉजी भी है, क्योंकि वो कंट्रैक्ट बायर है। उसने बोला कि आप ऐसा करते हैं, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप हेल्प कर देता हूँ, आप ये करो ये करो ये करो, आपको ये इनपुट चाहिए, वो इनपुट चाहिए, दिस काइंड ऑफ हेल्प चाहिए, फिनेंशियल चाहिए, ये सब चाहिए, वो मैं दे देता हूँ, और हम एक एग्रीमेंट कर लेते हैं। ऑलरेडी लीगल फ्रेमवर्क है ये। अब किसान को देखिए ब्याज फ्री लोन मिल गया, एडवांस मिल गया, और सेल करने का एक एग्रीमेंट होगा, और क्या चाहिए किसान को। तो कंट्रैक्ट फार्मिंग इज़ नॉट एन ऑप्शन। अगर हम इस देश के किसानों की तकदीर को बदलना चाहते हैं तो कंट्रैक्ट फार्मिंग इज़ दी ओनली ऑप्शन, जो किसान को बिना लोन या और किसी परेशानी के उसको एग्रीकल्चर प्रोडक्ट का एकदम बेस्ट एडवांस पेमेंट का एक एश्योरेंस देता है। ये सब रिफॉर्म्स जो है ये दे वेर ओवर ड्यू, बट फॉर्चुनेटली ये 3 बिल जो पार्लियामेंट में पेश किए गए हैं, मैं जब व्हेन आई स्टडीड ऑल ऑफ देम, देन मुझे एक लगा कि सच्चाई को कहीं ना कहीं एक एकेडमिक तरीके से लाना चाहिए, सो दैट
the truth